जी अस्सलाम वालेकुम, I am Rehman. I am Rehman. I am a fellow member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. I am associate member of Institute of Corporate Secretaries. I am PhD scholar now, and nowadays I am working as a company secretary in one of the public sector company. Today I have a partner, Mr. Ahmed Noman, for today's session of role of company secretary. I welcome to all the members of the participants on behalf of Pakistan Institute of Public Finance Accountants and on behalf of Islamabad Branch Committee PIPFA. I am requesting to the PIPFA management to please start the recitation of Holy Quran. Now I am starting the session for the today we have a session about corporate governance and the role of company secretary. Corporate governance is the collection of mechanisms, processes, and relations used by various parties to control and to operate a corporate entity. Today's session we have divided in two different sections. In first section, I will deliver my understanding about the corporate governance and the role of company secretary. And in the second section, Mr. Ahmed Noman will share some of the practical experience with you. And in the second section, Ahmed Noman will address the question answer session. So I am starting with the corporate governance. Corporate governance is the collection of mechanisms, processes, and relations used by various parties to control and to operate a corporate entity. A corporate entity is considered as a natural person due to corporate governance. Corporate governance is a mechanism for governance structure and principles identify the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board of directors, managers, shareholders, creditors, auditors, regulators, and other stakeholders. Corporate governance includes the rules and procedures for making decisions in corporate affairs. Corporate governance is necessary because of the possibility of conflict of interest between the stakeholder. Conflict of interest is a very important phenomena to address in the corporate governance. Now these are the nature of corporate entities in Pakistan. First one is the public limited company, and public limited company are of two types, listed company and non-listed companies. Then there is a private limited company, then there is a single member company, then limited liability partnership, then public sector company, public interest company, not for profit company, and entity established by Act of Parliament. Here I mentioned a note that companies are either limited by shares or limited by guarantees. In a listed company, it is mandatory to appoint the company secretary. In a public sector company, it is mandatory to appoint the company secretary. In public interest company, it is mandatory to appoint the company secretary. And in single member company, it is mandatory to appoint the company secretary. And the role of company secretary may be assigned to combined with the chief financial officer. There are some examples that in companies, the board of directors assigned the job of company secretary to the chief financial officer. Now these are some of the examples of the corporate entity
Just look at here that this is Oil and Gas Development Company Limited. It means that this is the public limited company. I have mentioned here public limited company, and OGDCL is listed on the stock exchange. So this is a listed company. And then there is an example of Hainan Laboratories Limited. Hainan Laboratories is also a listed company on the stock exchange and a public sector company. Then there is a picture that in which you can see a building, and here a word written that UCP, University of Central Punjab. So this is a university established through a special act of the Parliament. Now, who is a company secretary? The word secretary has been derived from the word secret. The company secretary is a secret officer in the company. Company secretary is a person who keeps the secrets of the company. Company secretary is a senior management position in the company. Company secretary to protect and ensure the interest of shareholders. Reporting line of the company secretary. It is very important to learn about it. Company secretary is responsible to the board of directors collectively. But the company secretary is not responsible to report to the individual director. At individual level of the director, the company secretary is not reportable. But at the collective level of the board of directors, the company secretary is responsible. But there should be a mechanism that how the company secretary to report to the board. There must be one in charge for the person. To meet this condition, corporate governance rules allows that the reporting line of the company secretary to the board of directors is through the chairman of the board. The functional reporting of the company secretary is to the board through the chairman, but the executive and administrative reporting of the company secretary is to CEO. For example, when company secretary is on leave, either casual or other, so he need to submit his leave application with the approval of chairman to the CEO for record purpose, for record in the administrative department or HR department of the company. So here are many other matters in which the company secretary's role is linked with the management, not only with the board of directors, not only with the chairman. Requirement of company secretary. Section 194 of the Companies Act 2017, public sector company, public company required to have a secretary. So it means that the company secretary is mandatory for appointment in a public company. A public company must have a company secretary possessing such qualification as may be specified. I will discuss in the later slide that what is the qualification criteria for the company secretary as set by the corporate governance rules. And then number 2, public sector companies corporate governance rules 2013. Rule 13 is about the appointment of company secretary. Here in rules it is written that the board shall appoint the chief financial officer, a company secretary and chief internal auditor by whatever name called. So in public sector companies, the appointing authority for the company secretary is the board of directors. And in all other companies, the appointing authority is the board of directors. Prescribed qualification for company secretary. This prescribed qualification is mentioned in company's general provisions and forms regulations 2018. Section 22 of these regulations is given below, in which the qualifications and experience of the company secretary is mentioned. How it is mentioned? It is mentioned like this, that subject to the provisions of section 194, I think this is section 194, where the Company Act required the appointment of company secretary. Subject to the provision of
Section 194 of the Act, the public company shall appoint a company secretary, a person who is a member of a recognized body of professional accountants or a recognized body of corporate or chartered secretaries, or number second, a person holding a master degree in business administration or commerce, or being a law graduate from a university recognized by Higher Education Commission of Pakistan, or in case of foreign qualification in the above disciplines, holds an equivalence certificate from Higher Education Commission of Pakistan and having at least 5 years relevant experience in case of listed company or 2 years relevant experience in case of other public company. What is the difference between these two types of persons? The first type of person here, a person who is a member of either a recognized body of professional accountant or a chartered secretary. For this type of person, there is no any experience required for that person. If a person is a professionally qualified for the Professional Accountants Institute or the Corporate Secretaries Institute, after becoming the member of these institutes, a person is eligible to appoint as a company secretary. But if a person is holding a master degree or a law graduate or is having a foreign qualification, but HEC grant them the equivalence for the master degree in business administration or commerce, he is eligible to become a company secretary after having 5 years experience in case of listed company and 2 years experience in case of other public company, or a retired government servant in basic scale 18 or equivalent or above with at least 15 years service, provided that a person already engaged by public company as company secretary in terms of the company's general provisions and forms rules 1985 may continue in that capacity. So this is a third type of qualification in which the retired company government officers of basic pay scale 18 or above are also eligible to become a company secretary, provided that they are already working as a company secretary in the company. This is a prescribed qualification of company secretary for public sector companies. The earlier prescribed qualification I have mentioned you, which is about the public company. Now this is a public sector company. Public sector company is a little different from the public company. Public company means is either a listed company or a non-listed company. But public sector company means in which government holds more than 50% shareholding in the company. So that company means this is a public sector company. And in public sector company, the prescribed qualification for company secretary is no person shall be appointed as the company secretary of the public sector company unless he is a member of a recognized body of professional accountants or member of a recognized body of corporate or chartered secretaries, or person holding a master degree in business administration or commerce, or being a law graduate from university recognized by Higher Education Commission with at least 5 years relevant experience. So this qualification is not different than the qualification required in public company. The only difference is in public sector company, the retired government officers are not eligible to work as a company secretary. So this is a very important to note that no person shall be appointed to the position of chief financial officer and the company secretary unless he is a fit and proper for the position. But for public company, this condition is not mandatory. This condition is not required, that a person must have a fit and proper person. Only for the public sector company, this condition is mandatory, that a person who is either a CFO or a company secretary must have a fit and proper person. SECP provide some of the criteria in which a person need to mention 8 to 10 facts about his professional ability, about his experience and about his qualification,
and on the basis of that criteria, it is determined by the board that this person is a fit and proper for this position or not. Now this is does a company secretary have management role? This is very important for the participant to learn about it. In history, the issue of management role of company secretary was remained as a critical and controversial. Sometimes it is treated that the company secretary has no management role or the company secretary has no executive powers. But after some time, it is determined that company secretary is a senior management position and he must hold some management powers. Just like a slide I am showing you, the English Court of Appeal in 1887, in one of the case, denied that a company secretary had ostensible authority to bind the company in commercial matters, to hold retention monies on behalf of the contractors. Here the English court denied this principle, but the same court in 1971 in another case decided that the company secretary has ostensible authority to sign the contracts connected with the administrative side of the company's affairs, such as employing staff, ordering cars, and so forth. So this is the some of the legal examples of some of the legal proceedings for the matters that does a company secretary have a management role or not. Now, what is doing on actual? I am addressing you now what is doing on actual basis, either a company secretary is doing a management role or not. Secretary's functions are purely administrative in nature. Nature of the company, according to the nature of company, the secretary has to perform different functions, different management functions. The potential management matters in which the company secretary exercised management powers are: first, portal of obtain information. This is a first and the authentic place where the stakeholder can obtain the information about the company. And then a bridge between the board of directors and the management. Company secretary tells the board what is management desired and tells the management that what is approved by the board. Company secretary received agendas from the management and present to the board during the meeting, and after the approvals of the board tells to the management that these are the decisions of the board regarding your day-to-day affairs or the company's operations. Then a company secretary work as a bridge between the regulator and the company. The regulator means the Securities and Exchange Commission of Pakistan or any other regulatory forum such that CDC or the stock exchange. So the company secretary work as a bridge between the regulator and the company. Company secretary is eligible to sign contracts on behalf of the company. In most of the companies, important contracts, just like the leasing agreements, just like the banks agreements, are signed by the company secretary. There are various examples in companies. And then to keep records of all contracts of the company. It is the mandatory responsibility of the company secretary to keep the record of all contracts A to Z. Whatever the nature of the contracts, whatever the amount involved in these contracts, company secretary is authorized and empowered to keep the record of all the contracts of the company. So this is actually purely a management role which is company secretary is doing. And then eligible to act as a legal advisor in the company. In many companies, I have seen that company secretary is appearing in the courts on behalf of the company to defend the company's matters. And in most of the companies, company secretary keep the legal proceedings and all the files of the legal proceedings in his office in safe custody. And the legal advisor
in most of the companies is reportable to the company secretary. So this is another example where that the company secretary is directly involved in the legal affairs of the company, which are purely a management matters. Furthermore, sometimes the CFO is given the authority, is given the additional charge for the position of company secretary, and by assigning the position of company secretary on additional charge basis to the CEO, the independence of the position of company secretary is no more existed, and now the management and the secretarial department is considered as the same, because CFO as a representative of the management, as a representative of the CFO of the CEO, holds the secretarial functions under his signatures, under his powers, under his department. So now he is directly using, management is directly using the powers of secretary, and secretary is using the powers of management when he is acting as a CFO to keep and use the common seal of the company. The common seal, company secretary is authorized to keep the common seal in his department. Every contract, every legal document, every banking document requires to fix the common seal. So this is also a potential involvement of the company secretary in management functions. Does the company secretary have a management role? One of the other example is that for the appointment and termination of chief executive officer, the company secretary play a very important role. Company secretary, in some of the companies, board authorize the company secretary to issue the appointment letter to the chief executive officer, and in some of the cases we have seen that the board authorized the company secretary to issue the termination letter to the company secretary on behalf of the board of directors. Coordination with the management in preparing agenda and working papers of the meetings. Company secretary continuously remain in connection with the management that how to proceed in the agenda and how to prepare the working papers, how to request to the board that which type of approval the management required. Then the logistics arrangement for the board meetings. In logistic arrangements, just for example, that accommodation, transportation, all these things are under the control of the management, under the control of the CEO. But for the board meetings, company secretary uses his powers to arrange the logistics for the board meetings. And then at the time of meeting expenses, just like the printing of working papers, just like the courier expenses, just like the meeting fees, and all these matters, the company secretary perform in connection with the management. Budget associated for the secretarial department. This is very critical point, that where the company secretary is involved with the management to do some management tasks. Just for example, for the budget allocation to the department, company secretary send his request to the CEO and the CFO to include my department budget in the overall budget of the company. Custodian of schedule of authority and powers. In a company or a corporate entity, whatever is doing by the management, whatever is doing by the board of directors, whatever is doing by the shareholders are mentioned in the schedule of authority, that what position hold, what powers to do. Just for example, what are the powers assigned to the CEO? What are the powers assigned to the CFO? So the company secretary is a position to keep the record of the approval of these schedule of authorities or powers, and company secretary act as a custodian of these important documents. To choose appropriate words of approval for execution by management.
I have put here an advertisement to show you that what the company secretary do as a management role. This is a advertisement for the position of chief executive officer. Now the board authorized for this position to company secretary to receive the applications for the company secretary. So this is a classic example to describe you that how the company secretary do some management role. Now I am moving forward towards the other part of the presentation. What does a company secretary do in the company? It means that what is the original role, what is the basic role of the company secretary in the company? Company secretary is responsible for following meetings. Just for example, meetings of the board of directors, meetings of board committees, meetings of shareholders, and for these meetings, what functions company secretary perform? Company secretary perform that company secretary receive agendas and working papers from the management. After receiving these documents, company secretary discuss these agendas and working papers with the chairman. After discussion, chairman allows the company secretary to include these agendas in the board meeting, and these agendas should not be included in the meeting for the meetings. In accordance with the permission of the chairman of the board, company secretary issue the notice, agenda and working papers for the meetings. To hold meetings, to check quorums of the meetings, to record minutes of the meeting, to report outstanding actions including responses to inquiries or complaints directed by the board. When a board is continuously working on different aspects of the company, a continuous meetings are scheduled. Board approves board sanction different approvals to the management, and in every meeting it is the responsibility of the company secretary to describe to the board that what are the actions which are approved by the board have been taken by the management, and what are the actions which are still pending at the end of the management. To issue minutes with the approval of chairman. For these minutes, company secretary is also required to discuss the draft of the minutes with the management, and because management is responsible to implement the decisions. For implementation, company secretary need to use proper words, need to use all the words which helps the management to implement the approval of the board in true letter and spirit. And then to issue the extracts of the meetings as and when required by the management. These extracts are in the form of decisions or approvals or resolutions. In addition to these primary roles for the board meetings, committees meetings, shareholders meetings, and the functions of the company secretary is also doing some more roles. Just for example, to make compliances on the corporate laws, to follow memorandum and article of the association, to file corporate returns. There are number of returns which are required for the company to file with the Securities and Exchange Commission of Pakistan. And all these returns are time bounded. Just for example, the Form 29, which is related to the change in board of directors, change in auditors, change in auditors, change in legal advisor, change in company secretary and CFO. So all these changes are required to file to the SECP on Form 29 within 14 days of any change. And the Form A, which is required to file to the SECP within 30 days from the date of AGM. To manage key corporate documents and records like statutory books, registers, returns,
What are these documents? This is a very important corporate record of the company in which there are different registers. Just for example, register required under section 205, register required for the members of the board, register required for the conflict of interest. So all these registers are required for the Companies Act is required to keep the record of all these important corporate information. Companies Act is also required to hold the shareholders information. Who are the shareholder? How much shares they have purchased? How much shares they have sold? Now what is the current shareholding of the shareholders? So every time Companies Act must informed about the shareholders information and their shareholding. Supporting the chairman in performing his or her role, including the provision of appropriate brief material. To manage approximate proxies for annual general meetings, to manage election of directors, to manage appointment or reappointment of auditors, to manage dividend or bonus issues, to manage further issuance of share capital. So all these are the role of the company secretary to perform in addition to the basic roles. There are some more roles which are required for the company secretary to perform. Company secretary to act as an advisor to the chairman and to the board. For what matters? For the matters of for corporate matters, secret or confidential matters, induction of directors on the board of the company, constitution of board committees and their TORs. So for all these matters, company secretary act as an advisor to the chairman and to the board. There is some problem in the slides. I think someone controlling the slides and performing some action which I am actually not doing these tasks. I am requesting to the management to please look into this. So the company secretary act as an advisor to the chairman and to the CEO. Company secretary is not just an advisor to the chairman and to the board. Company secretary is also work as an advisor to the CEO. For what purpose? Determining the annual business plan, other important issues of strategic nature, something doing by someone, but I am not doing these actions. I am requesting to the management to please look into this matter. I am requesting to the management to please look into the matter that someone controlling the slides and I am running to the slide, but someone changed the sequence of slides here. So here you can see that company secretary is not only the advisor to the chairman or to the board, but also to the chief executive officer. Now I am moving towards the third goal of today's presentation, today's webinar. How is the role of company secretary changing nowadays? The company secretary must be a knowledgeable person, must be a reliable, excellent communicator, a good listener, approachable, must have answers for the corporate questions,
must have history of the company with respect to board approvals and corporate events. Knowing the history of the company is very important for the company secretary. He must know that when the board constituted, what was the who are the members of the board in previous tenure, in previous tenure, and who are the founder directors of the company, what approvals already granted by the board in previous meetings, and what corporate actions, just like the major corporate actions are the issuance of dividend, issuance of bonus, and approval of financial statements, appointment and reappointment of the statutory auditors, increase in paid up capital, increase in authorized capital. So company secretary must have the history of all these corporate events. How is the role of company secretary changing nowadays? Nowadays, due to COVID-19, all the meetings of the board, the committees, and the shareholders are holding on online. So due to these online meetings, it is very difficult for the company secretary to manage the corporate record. What type of record? The signed minutes, the signed approved minutes during the meeting, when the minutes of the previous meeting approved by the board. At the same time, company secretary get the signatures on the minutes from the chairman or from all of the directors. But due to the online scheduling of the meeting, it is difficult for the company secretary to sign these documents, to sign on the attendance sheet, to get the signatures on attendance sheet, and to get the signatures on the board minutes. And then complexity in composition of the board. In nowadays, SECP requires that the board of the companies must consisted on based on different qualification, based on different sector-wise representation and gender-wise representation. So sometimes it is difficult for the company secretary and for the board to find that kind of person. And especially this happened in the case of independent directors. When I am an owner of 90% shareholding of the company, why I give one vote, one share to the person to become a director in my company, and why I authorize this person to act as an independent director in my company when I am holding 90% holding of my company. So due to this complexity, the company secretary's role is now changing. Succession and remuneration of the board of directors. It is very important for the company secretary to keep the board members active on the board and to pay their remuneration, the meeting fee, well in time. Continuously engage with major shareholders, family-owned companies. It is sometimes the company secretary found very difficulties that in Pakistan, most of the corporate entities, well-known corporate entities are actually a family-owned businesses, but they are running their business affairs in the name of corporate entities, in the name of companies. So in family-owned businesses, the company secretary is to perform all the corporate requirements, the requirements of the SECP, requirements of the stock exchange, the requirements of the CDC, and the requirements of the share registrar. But the company's owner's mindset is actually the safe mindset. So in this type of mindset, the company secretary's role is very critical, and this is a very complex for the company secretary to handle this scenario. Keep gender diversity on the board. CDC accounts for the shares transfers, shareholders information. From 2007, a CDC hold the shareholding of the companies in electronic form, just like we are holding our monies into bank accounts.
Similarly, a CDC account is opened by the Central Depository Company, and they issued a shareholding book in a shape which is purely in the shape of checks we have received from banks for our bank accounts. So due to the due to the shares on CDC, it is very difficult. Sometimes it is difficult for the company secretary to keep update the shareholding list, because CDC provides the shareholders list after a month or on the request of the company within 15 days of the request. So day wise transaction of the shares transfer is difficult for the company secretary to manage. Handling the share registrar, for the listed companies, it is mandatory that there must be a share registrar. So it increased the role of the company secretary to engage with the share registrar for his functions, and then ensure effective flow of information. Company secretary is required to provide information at different forums. At different forums means that to provide the information on the request of the directors, to provide information on the request of shareholders, to provide information on the request of banks, to provide information on the request of auditors, statutory auditors, and to provide information on the request of CDC, on the request of stock exchange. So company secretary is almost busy in providing the information at different forums, different corporate forums and different forums of the stakeholders. Changes in corporate laws. We have seen that in last 5 years, there is a very fast track changes in the corporate affairs and in corporate laws. First, we have seen that there was a company's ordinance which remained effective till 2016. Then there is a Companies Act 2016 remain effective for some time, for few months, and then there is a Companies Act 2017, and then there is a public sector corporate governance rules 2017, which have been amended just after the 4 years. But in the history, SCCP have not changed the rules frequently. But in the last 5 years, last 5 to 6 years, SCCP changed the rules very frequently on daily basis. In last week, I have seen that SCCP reduced the number of forms from 45 to I think to 25 to 30. They have eliminated the requirement of 15 forms which are required for the company to file with the SCCP. Now this is again this change the role of company secretary, that he needs to learn about the present situation, that what of the form is required to file with the Securities and Commission and what form is exempted after the change. So these changes in the corporate rules, corporate laws are also challenging for the company secretary's role. Now, at the last, I have asked you that more governance means more work for the company secretary. Strict and time-bounded regulatory and legal compliances also increase the work of the company secretary. More stakeholders issues create more work for the company secretary. So all these issues are changing the nature of job of the company secretary. So I am requesting to the participants to please ask the questions if you have any in your mind, and I am requesting to Mr. Ahmed Noman to please share your practical experience with the participants. What is your learning about the corporate governance, about the role of company secretary, and please address the questions of the participants. Excuse me, sir, आपके माइक म्यूट है. नुमान साहब, आपका माइक म्यूट है, जरा आपका माइक म्यूट है. Sir, I thank you very much for such a mindful and thought-provoking presentation. You have covered the topic quite comprehensively, and I think if anyone have any question, he may feel free to kindly ask, or should.
let's see at the chat portion. If there is any moderator, please put questions one by one. सर हम So वन that I बाय वन may के क्वेश्चन respond to आंसर्स them. ले लेते हैं, हम उनका हैंड रेज करवा लें, जिनके पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन हैं काइंडली अपने हैंड रेज कर लें ताकि हम उनको वन बाय नेम कॉल करके हम उनके क्वेश्चन आंसर लें। Participants are requested to make any question, please. Please ये feel free to तारिक make any मुनीर साहब को जरा प्लीज आप माइक दे दें। तारिक मुनीर साहब को प्लीज माइक दे दें जरा। जी सर, तारिक मुनीर जरा माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है सबको सर मेरी? जी आ रही है जी। जी अच्छा, मुझे आपने थोड़ा सा बहुत अच्छा माशाल्लाह ज़ियाद साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। एक चीजें लगी थी कि हमें कुछ आपने अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की बात तो की है, लेकिन हमने रिमूवल्स की बात नहीं की। बहुत सारी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी की रिमूवल को प्रॉपरली उस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता जिस तरह लॉ में रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर जरा आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें देखिए, वन थिंग इज श्योर कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द रिमूविंग अथॉरिटी। अगर बोर्ड आपको कंपनी सेक्रेटरी द पोजीशन कि ओनली अ बोर्ड कैन अपॉइंट इट, और अनलेस until and unless board delegates the authority to a certain person to appoint or remove a person। तो इसमें यह है कि अगर कहीं पर ये फ्लॉ है, अगर बोर्ड की एक्सप्रेस रेजोल्यूशन से, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड से अगर कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव नहीं किया गया, तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए मतलब ये एक चांस है कि उसमें वो फिर एक मतलब लीगल रिकोर्स उसके लिए वो ऑप्ट कर सकता है और एससीसीपी को भी इवन अप्रोच कर सकता है। तो वन थिंग इज श्योर कि भाई जो बोर्ड ही इसकी जो है वो रिमूविंग अथॉरिटी है। तो अगर नहीं, ये बिल्कुल बोर्ड ठीक है से आपने अगर सर। कहीं फ्लॉ है उसकी सॉरी, लेकिन जिस तरह अगर अपॉइंटमेंट बोर्ड के में लिए अगर पहले एचआर कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड को, और बोर्ड उसके बाद जी जी अपॉइंट कर लेता है कंपनी सेक्रेटरी को। आपको पता है कि जी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में मोस्टली 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। जी मोस्टली कंपनी सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट जो है वो 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। अब अगर इसी कंपनी में अपॉइंटमेंट के बाद 3 इयर्स के बाद एचआर कमेटी रिकमेंड कर देती है बोर्ड को फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, और 3-4 महीने के बाद जब बोर्ड मीटिंग होती है उसमें सीईओ अगर ये प्रेजेंट कर देता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो फिर क्या रेमेडीज हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास? इसको थोड़ा सा मुझे बता दें, वेदर ही वेंट टू जी। द इसमें कोर्ट देखिए या फिर कि एससीसीपी को जैसे कि इन्फॉर्म ये करना बताया चाहिए। गया है कि जी, इसमें देखिए जैसे ये जैसा साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में कंप्रिहेंसिवली कवर किया कि ये कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्टिंग लाइन है थ्रू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ही रिपोर्ट्स मतलब उसकी रिपोर्टिंग लाइन है थ्रू सीईओ, बट मतलब वो जो उसकी फंक्शनल उसकी रिपोर्टिंग लाइन है वो है चेयरमैन। तो उसमें वो ऐसे अगर कोई इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कंपनी में और मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो और उसमें अगर वो समझ रहा है कि उसमें उसकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो उसके पास एक बेटर कोर्स ये है कि वो चेयरमैन के पास अप्रोच कर सकता है और चेयरमैन को मतलब एनलाइटन कर सकता है, मतलब ही इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू चेयरमैन। तो चेयरमैन फिर इस चीज़ को मतलब वो बोर्ड में लेके आ सकता है, और अगर समझता है चेयरमैन कि ये सीईओ इज राइट, तो फिर अल्टीमेटली देयर इज द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की जब तक एक्सप्रेस रेजोल्यूशन नहीं होगी, और ऑफ कोर्स कि अगर कोई इस तरह की देखें अगर इशू है, एक तो आप ये देखें ना, एक सिंपली एक चीज़ होती है कि ऑफिसर्स की मतलब अपॉइंटमेंट में कि ऑन 1 month नोटिस a person can be removed from service, मतलब 1 month नोटिस के साथ ये है कि भी योर सर्विसेज आर नॉट नो मोर रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसमें भी ऐसा है कि अगर आप ये समझते हैं कि देयर इज मतलब ये कोई इशू इन्वॉल्व है और एक कंपनी सेक्रेटरी को 3 साल के लिए हायर किया गया था और 3-4 महीने के बाद एक ऐसी नौबत आ गई है, तो इट मीन्स कि अगर उसमें भी उसको अगर वो ग्रीवेंसेस समझ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी साहब के भी मेरे साथ कुछ ज्यादती हो रही है और मुझे अपनी एम्पल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की, तो वो चेयरमैन के थ्रू वो बोर्ड में वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है और बोर्ड में वो लेके जा सकता है। एचआर और कमेटी अगर का जहाँ बोर्ड तक ताल्लुक है कंटिन्यूसली इसको इग्नोर कर रहा है, के अगर उसमें बोर्ड ये बोर्ड है कि कंटिन्यूसली अगर बोर्ड कंटिन्यूसली उसकी सारी रिक्वेस्ट को तारिक मुनीर या साहब मैं उसकी आपको एड्रेस करता हूँ। एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर रहा है, सर मैं आपको एड्रेस करता हूँ। असल में जो आप पूछ रहे हैं कि रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जो है वो लॉ साइलेंट है। लॉ असल में इसमें साइलेंट नहीं है, उसका प्रोसीजर ये है कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वही रिमूवल का प्रोसीजर है। वो किस तरह
कि अपॉइंटमेंट के लिए पहले बोर्ड की एचआर कमेटी जो है वो इंटरव्यूज करती है, और इंटरव्यूज के बाद वो बोर्ड को रिकमेंड कर देती है, जी ये हमने शॉर्टलिस्ट किया, बोर्ड इनमें से किसी एक बंदे को लगा ले। जी अच्छा, बिल्कुल जब सही कह रहे हैं अब आप पब्लिक सेक्टर के अंदर जब, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अलावा जो कंपनीज हैं वहां रिमूवल का भी यही तरीकाकार है। वहां बोर्ड की एचआर कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है कि बोर्ड को कि जनाब ये कंपनी सेक्रेटरी का इतना टेन्योर पूरा हो चुका है और हम ये चाहते हैं कि आप जरा थोड़ा चेंजिंग फेज जो है वो किया जाए और कोई नया कंपनी सेक्रेटरी मार्केट से लिया जाए, या इन इश्यूज के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी ने बोर्ड को सही तरह से हेल्प नहीं किया, और उसके बाद फिर फुल बोर्ड की मीटिंग के अंदर उसका पूरा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और फिर कंपनी खुद उसकी रिमूवल की फॉर्म 29 फाइल करती है एससीसीपी को। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये थोड़ा सा एड्रेस करने की पोजीशन सूरत हाल है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर एक कंपनी सेक्रेटरी आया है और उसको एक टाइम बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप 3 साल के लिए कंपनी सेक्रेटरी हैं, अब आप जो बात कर रहे हैं वो मैनेजमेंट ने बेसिकली आपके साथ या किसी भी दूसरे के साथ ये प्ले किया है कि मैनेजमेंट को एजेंडा ही नहीं लेकर गई टाइम के ऊपर। 3 साल जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो कम से कम 1 या 2 महीने पहले एजेंडा लेकर आती है एचआर कमेटी में और वो फॉरवर्ड करती बोर्ड को, और एचआर कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड में जाती। अब मैनेजमेंट लेकर नहीं गई, 3 साल पूरे हो गए, 3 साल के 10 दिन बाद मैनेजमेंट ने कहा भी आप तो कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटेंड नहीं हुआ। लीगली वो सही कह रहे हैं, लेकिन लीगली वो सही नहीं भी कह रहे क्योंकि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रेजेंट द एजेंडा टू द बोर्ड। तो इसको आप किसी भी अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर छोटा सा मैं इसमें छोटी सी बात करना कि एचआर कमेटी में पहले एजेंडा गया है एक्सटेंशन का, ठीक है सुन आप क्लियर कर रहे हैं कि 3 साल मीटिंग ही नहीं हुई तो व्हाट द हेल वाज कंपनी सेक्रेटरी डूइंग? नहीं सर नहीं, इट मींस 3 के साल देयर सम इनएफिशिएंसी ऐसा ऑन नहीं द है, पार्ट ऑफ ऐसा कंपनी सेक्रेटरी एज वेल। नहीं सर ऐसा नहीं है। 3 साल मुकम्मल हुए तो उसके बाद एचआर भी मुकम्मल होने में कुछ समय 1 हफ्ता बाकी था। एचआर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें एजेंडा लेके गई मैनेजमेंट, एचआर कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया और उसको एंडोर्स कर दिया बोर्ड की रिकमेंडेशन के अप्रूवल के लिए, ठीक है। बोर्ड की अगली मीटिंग जो थी एचआर कमेटी के बाद वो 3 महीने के बाद हुई और 3 महीने कंपनी सेक्रेटरी काम करता रहा। बोर्ड की मीटिंग में वो एजेंडा ही नहीं लेके गए, सिर्फ ये डिसाइड किया दिया कि एक्सटेंड नहीं हुआ और बस खत्म बात। प्रोसीजर लैप्स है, इसके ऊपर एससीसीपी को हमें जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरी छोटी ज्यादा और बात है कि हमने एज डिस्कस नहीं की कंपनी सेक्रेटरी की। बहुत सारी कंपनियों मैंने देखा है कि वो एक एज लिमिट डिफाइन की 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम कैसे इसको कर सकते हैं? बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी 45 साल के नहीं है जी। इसमें देखिए हर कंपनी का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो अपने नीड्स के मुताबिक वो कंपनी सेक्रेटरी की क्राइटेरिया जो है इंक्लूडिंग एज वो इसमें वो सेट करे। अगर वो लॉ इसमें साइलेंट है इट मींस कि वो लॉ इसमें कंपनी को एक कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये कंपनी की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या क्राइटेरिया सेट कर रही है। ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया जो है उन्होंने एक क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इन टर्म्स मतलब वो सेट कर दिया है। अब उसमें अगर इसके मजीद मतलब जो है रेलिवेंट पैरामीटर्स जो है कि व्हाट शुड बी द एज, व्हाट शुड बी द जेंडर और क्या क्या होना चाहिए बाकी इसमें, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली वो फिर कंपनी का बोर्ड या कंपनी की एचआर कमेटी जो है कंपनी अपनी नीड्स के मुताबिक डिटरमिन करती है। तो ये कंपनीज के ऊपर कुछ चीज़ें हैं कि जो सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती, ये कंपनी की डिसीजन है। ये आतिफ अहमद को प्लीज माइक दे दें, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आतिफ अहमद को माइक दे दें। प्लीज प्लीज प्लीज। जी आतिफ अहमद सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। जी आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया था स्लाइड में कि कंपनी सेक्रेटरी कैन एक्ट एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ कंपनी, तो प्लीज़ इसको ज़रा एलेबोरेट कर दें कि कैसे कंपनी सेक्रेटरी मतलब एक्ट कर सकता है एज अ लीगल एडवाइज़र। क्या लीगल एडवाइज़र अपॉइंटमेंट जो है एक्ट वो अलाउ करता है इस तरह कि कंपनी सेक्रेटरी ही एज अ लीगल एडवाइज़र अपॉइंट हो जाए किसी कंपनी का? प्लीज़ सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। थैंक यू। देखिए लीगल एडवाइजर इन अ सेंस ये नहीं है कि कंपनी का लीगल एडवाइजर जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। कंपनी का लीगल एडवाइजर ऑब्वियसली वो होगा जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा या सॉलिसिटर होगा। इसमें लीगल एडवाइस का देने का मकसद ये था, जो इसकी फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ये था कि कंपनी को डे टू डे बेसिस पे सर्टेन लीगल इश्यूज जो है फेस करने पड़ते हैं।
तो अगर एट हैंड कंपनी को इसकी लीगल इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसकी लीगल स्टेटस पता चल जाए, तो वो कंपनी सेक्रेटरी सबसे बेस्ट मतलब पार्ट होता है कि वो बोर्ड को एजुकेट कर सकता है कि भी हमने किस तरफ लेके जाना है। अगर वो मतलब मैटर है लिटिगेशन का या किसी और मतलब इसमें कुछ मतलब ऐसे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो फिर मतलब जाहिर है फिर लीगल एडवाइजर को ही रेफर किया जाता है। बट ऑन द एडवाइस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर आर बोथ डिफरेंट डिस्टिंक्ट पोजीशंस, ये दोनों एक नहीं हो सकती। आतिफ अहमद साहब, मैं थोड़ा चाहूंगा आपको, मैं भी थोड़ा इसमें जी गाइड सर करूं। प्लीज। देखिए, जो कंपनी सेक्रेटरी की जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना, उसमें एससीसीपी ने लॉ ग्रेजुएट को अलाउ किया कि वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। और कुछ अगर आप कंपनी सेक्रेटरीज की एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखें, जो पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज ने कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगी ही लॉ ग्रेजुएट है। वो मांगा ही नहीं कि ये एमबीए फाइनेंस भी हो या ये वो हो अपना क्या जी कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जब वो और उसके साथ वो लिख देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर, ठीक है, और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट्स में ही लिखा होता है कि जनाब तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स आपने कंपनी की ब्याह के ऊपर देखनी है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के ब्याह के ऊपर कोर्ट के अंदर अपना वकालतनामा नहीं दे सकता अगर वो एडवोकेट भी है, तो वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होता है जब वो किसी कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है। वो जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, कंपनी का लीगल एडवाइजर वही होगा जो कंपनी के केसेस को प्रोसीड कर रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर भी कंपनी को एक बंदा चाहिए होता है जो डे टू डे केसेस के ऊपर जी जी चेयरमैन को या बोर्ड को या सीईओ को कोऑर्डिनेट कर गाइड सकते करे, जी। कोऑर्डिनेट करे। ये बेसिकली वो जी कोऑर्डिनेशन वाला काम। but sir he cannot be appointed as a legal advisor, specifically legal advisor of a company cannot be appointed as a legal advisor। company secretary legal advisor के तौर पे काम नहीं कर सकता। am I right sir? जी जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो लीगल एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसको वो रोल दिया जा सकता है कि वो एज ए कोऑर्डिनेट कर ले मैनेजमेंट से जो प्रोसीडिंग्स कंपनी की चल रही हैं। राइट सर राइट। थैंक यू सर। अदील चौधरी साहब को प्लीज माइक दे दें, अदील चौधरी साहब को। सर वो एस सॉल्यूशंस लिंक से उनके मैंने माइक दिया, पहले उनका हैंड रेज नहीं हो रहा था, पहले उनको पहले फिर नेक्स्ट मैं अदील साहब को ले लेता हूँ। I am PIPFA member. PIPFA is being eligible. सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है और बहुत कम आ रही है। कांडी जरा अपना माइक जगह ठीक कर लें। Yes. Hello. Hello. जी सर बताइए। आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि as per the definition of the company's law, as PIPFA member is authorized to become company secretary of the CFO. Sir, I'm sorry, we can't hear you. सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर। नेक्स्ट मैं अदील चौधरी साहब को ले रहे हैं, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आप या फिर ये क्वेश्चन मतलब कोऑर्डिनेटर क्या एक्सप्लेन कर दें, क्या क्वेश्चन है इनका? मोहम्मद उस्मान साहब ने सर रेज किया है, अगर आप प्लीज, अगर जब तक के अदील चौधरी साहब कनेक्ट नहीं होते हैं, आप मोहम्मद उस्मान साहब को जरा प्लीज ले लें। हेलो जी, आवाज आ रही है सर, बोले आप। अच्छा अदील चौधरी साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोले। जी जी सर, मैंने पूछना था कि आपने अभी एक पॉइंट में डिस्क्राइब किया था कि सीएफओ एक्ट एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जबकि ये जो सीसीजी रूल्स 2019 है उनके साथ फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो जाएगी कि सीएफओ है कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी प्ले कर रहा है? सर ये चीज प्रैक्टिस में है बहुत सारी कंपनीज की कि सीएफओ को जॉइंट रोल दे दिया जाता है, सीएफओ का भी और कंपनी सेक्रेटरी का भी। और बहुत कम कंपनीज पाकिस्तान में हैं जो जिसमें सीएफओ अलग से अपॉइंट है और कंपनी सेक्रेटरी अलग से अपॉइंट है। और एससीसीपी जब उसके पास फॉर्म 29 जाता है फाइल हुआ जिसमें सीएफओ के साथ ही लिखा होता है कि जनाब कंपनी सेक्रेटरी का भी चार्ज इन्हीं के पास है, तो एससीसीपी उसको एक्सेप्ट करती है। सर उसमें तो फिर सीधी क्वालिफिकेशन है ना सीसीजी रूल्स की। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपल्शन है कि ये कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ का रोल डिफरेंट होगा, डिफरेंट पर्सन अंजाम देंगे। इसमें सिर्फ बाकी और कंपनीज के लिए इसमें कोई ऐसी स्टिपुलेशन नहीं है। और ये लिस्टेड कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 में ये, और इससे पहले जो था 17 में, ये दोनों जगह ये स्टिपुलेशन आ गई थी कि दीज शुड बी डिस्टिंक्ट पोजीशंस।
अच्छा, तो इसके एक और अलावा अभी क्वेश्चन सर। इवन के पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो मतलब रूल्स हैं, उसमें भी ये अलाउ किया जा रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ कैन बी वन पर्सन। अच्छा, एक और रूल सर, अगर सपोज दैट कि ये कॉन्ट्रडिक्शन को 1 मंथ के लिए आती है, तो इसको क्या सर मतलब आपकी सीसीजी की आवाज जो रिपोर्ट है में, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सुनने में। मैं क्या, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन 1 मंथ के लिए आती है, तो क्या ये रिपोर्ट करना जरूरी है कि 1 मंथ के लिए, कि ये 1 मंथ की कॉन्ट्रडिक्शन आई है या ओवरऑल आई है एज पर सीसीजी रूल्स? सर सीसीजी रूल की जो रिक्वायरमेंट है ना, नुमान साहब को आपकी आवाज नहीं आ रही सही है, मैं इसलिए आपको एड्रेस करता हूँ। सीसीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये देखता है कि 30 जून के स्टेटस के ऊपर पोजीशन क्या है। अगर तो लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में 30 जून के स्टेटस के ऊपर सीएफओ को कंपनी सेक्रेटरी का रोल असाइन किया हुआ है, वो बेशक 25 जून को असाइन किया हो और 5 जुलाई को वो असाइनमेंट खत्म कर दी हो और असल कंपनी सेक्रेटरी आ गया हो, ऑडिटर उसको अपनी सीसीजी कंप्लायंस रिपोर्ट में नॉन कंप्लायंस रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पीरियड उसने फर्ज किया कि 1 मार्च को एक कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन कर गया और अगला कंपनी अपॉइंट करने के लिए कंपनी को 1.5-2 माह का प्रोसेस लग गया और 1 मई को एक नया कंपनी सेक्रेटरी आ गया, तो सीसीजी रिपोर्ट में वो नॉन कंप्लायंस शुमार नहीं होगी। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट हम ले रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब को, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो, अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि क्या पिप्पा का जो एसोसिएट मेंबर है या फेलो मेंबर है, क्या वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी या चीफ इंटरनल ऑडिटर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? मींस कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, तो ऑब्वियसली पिप्पा इज अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, तो क्या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पिप्पा का मेंबर है, चाहे वो एसोसिएट है या फेलो मेंबर है, वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है और ड्यूरिंग कोविड-19 ही उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और जो प्रैक्टिस पहले चल रही थी कि यार फिजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, और जिस तरह ज़ियाउर रहमान साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि ड्यूरिंग कोविड-19 ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं और सिग्नेचर्स जो हैं सारे बोर्ड मेंबर्स के या शेयर होल्डर्स के, तो वो पॉसिबल नहीं है टेकअप करना और उनको रिकॉर्ड करना। तो क्या जो ऑनलाइन मीटिंग का रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज किया है, चाहे जूम है या व्हाट्सएवर, तो उसकी जो पार्टिसिपेंट की रिकॉर्डिंग है वो सफिशिएंट एविडेंस है फॉर देयर सिग्नेचर्स एंड पार्टिसिपेंट कि वो उन्होंने मीटिंग अटेंड की? और उसको क्या हार्ड फॉर्म में अटैच करना किस तरह, वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग को आप कर सकें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर चैट सेक्शन में हम हर डायरेक्टर या हर शेयर होल्डर से कहें कि आप अपनी अटेंडेंस लगवा दें, जिस तरह अभी हम लोग अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, अपना नाम लिख के और आगे लिखा हुआ है कि हमारा ये पिप्पा का नंबर है, जो भी और इस तरह क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन मीटिंग में इस तरह जो है वो किया जाए? थैंक यू। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये देखिए ऑनलाइन मीटिंग्स को एसएससी जो है वो खुद मतलब एनकरेज कर रहा है दिस डेज। तो इसमें ये है कि इसका प्रोटोकॉल जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। और इवन कि अगर आपके पास अटेंडेंस मार्क हुई है यहाँ पे, तो आपके एक उस पर विटनेस जो है वो सफिशिएंट है। आपने ऑब्वियसली अटेंडेंस शीट में उसमें लिख लेना है कि ये उस्मान साहब ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, वेदर नॉट के, क्योंकि इस तरह आप तो माशाल्लाह सब बहुत ही मतलब एलीट क्लास मतलब वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो शेयर होल्डर्स में ऐसी भी कैटेगरीज होंगी कि जिन्होंने शायद कभी जूम भी अटेंड ना किया हो या कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, और किसी तरह अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अगर कहीं पर अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपनी को खुद अपना मैकेनिज्म बनाना है कि किस तरह उनकी पार्टिसिपेशन हुई है और वो किस मोड में मतलब और किस तरह से उन्होंने वो किया है उसको। तो ये जो है ना, ये आपकी कंपनी ने प्रोटोकॉल जो है वो खुद डिसाइड करना है कि कैसे इसको वो लिया जा रहा है। अब ये जो पहला पार्ट था आपका क्वालिफिकेशन का,
इसमें ऑब्वियसली ये उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो चूंकि लॉ में डिसाइडेड है। अब ये अगेन फिर वही बात है कि वो कंपनी जो है उसने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, ऑल्दो मतलब वो एलिजिबल है। और आप जैसे ये जैसा साहब ने बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज और उनकी कई किस्में हैं। अब ऑब्वियसली सबसे जो टफ कंपनी होती है, सबसे ज्यादा जो इसमें काम करना पड़ता है, सबसे ज्यादा मुश्किल, ऑल्दो मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मगर लिस्टेड कंपनी जो होती है सबसे वो जो एक्सक्लूसिव मतलब कंपनी होती है जिसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें उसकी एवरी मोमेंट उसकी उसकी हर इशू हर उसकी मतलब जो बात होती है वो प्राइस सेंसिटिव होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा मतलब केयर करनी पड़ती है इन चीज़ों की। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो कंपनी लिस्टेड कंपनी में इन्वॉल्व होती है। तो अब वो इस तरह की कंपनी, हर कंपनी जो है वो अपने मतलब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कंपनी सेक्रेटरी का क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करती है कि किस तरह का हमें कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, दिस मेक्स यू एलिजिबल कि ये आप होना चाहिए। एज रिगार्ड पिफा का रूल, मैं ज़िया साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली वो एक्सप्लेन कर दें कि पिफा जो है वो आपको कहाँ कहाँ एलिजिबल करता है। थैंक यू नुमान साहब। ज़िया साहब, आप काइंडली जरा पिफा क्वालिफिकेशन की एज अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इन अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस वो जरा एक्सप्लेन कर दें, और वेदर PIPFA is a recognized body in Pakistan or all over the world like ICAP, ICMA and ACCA and other recognized bodies. Thank you. जी उस्मान साहब, इसमें ऐसे है कि पहले तो मैं आपका अटेंडेंस वाला थोड़ा सा मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं बोर्ड की मीटिंग कॉल करता हूँ जूम के ऊपर, तो मेरे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर कुछ लोगों की आ रही होती है कि किस किस ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं उसका सिंपली स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर उसको वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। और जब मैं मीटिंग फीस के चेक बनाने के लिए अपना नोट मूव करता हूँ कि फलां फलां डायरेक्टर प्रेजेंट था, तो उस प्रेजेंस में मैं वो जो स्क्रीनशॉट होता है वो साथ नीचे अटैच कर देता हूँ, उसको अपने साइनों से वेरीफाई कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे जो अटेंडेंस वेरीफाई होती है वो ऐसी होती है कि जब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चेक भेजा जाता है मीटिंग फीस का बोर्ड को, और उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है। तीसरे नंबर पर जब अगली मीटिंग होती है तो उसमें पिछली मीटिंग के मिनट्स अप्रूव किए जाते हैं, और उन मिनट्स के अंदर भी ये लिखा होता है कि कौन कौन पिछली मीटिंग में प्रेजेंट था। तो ये 3 तरह के जरिए हैं कि हम ऑनलाइन मैकेनिज्म में भी लोगों से और लोगों की अटेंडेंस को जो है एज ए कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर कर रहे हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जी पिफा की जो रिकॉग्निशन की जो सूरत हाल है, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वैसे आप पिफा ऑफिस से भी इसकी मजीद क्लैरिटी ले सकते हैं कि 2005 में SECP ने कोई लेटर ऐसा इशू किया था रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में, जिसमें पिफा इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो फिर उसके बाद शायद कोई ऐसी डिबेट चली कि जो इफेक्ट के फोरम के ऊपर फुल मेंबर है, उस फुल मेंबर के को जो है वो रिकॉग्नाइज तस्वुर किया जाएगा। और पिफा का इस वक्त का स्टेटस फुल मेंबरशिप का इफेक्ट के फोरम के ऊपर क्या है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैनेजमेंट से पूछें। अगर तो पिफा फुल मेंबर है इफेक्ट का, एसोसिएट मेंबर तो था जब से मैं पिफा का मेंबर हूं, मैं खुद फेलो मेंबर हूं पिफा का, एसोसिएट मेंबर तो था, लेकिन फुल मेंबरशिप की अप्रूवल जो है वो इन प्रोसेस थी पिछले कुछ साल 2 साल से। अगर तो वो हो गई है तो फिर तो पिफा का मेंबर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी एलिजिबल है, वो दूसरी पोजीशंस के लिए भी एलिजिबल है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन ये आप प्लीज मैनेजमेंट से जब आपको टाइम मिले तो आप उनसे पिफा की मैनेजमेंट से इस हवाले से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया नुमान साहब, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट्स को क्लियर किया। मेरा जो क्वेश्चन था ना वो आप लोगों से मिनट्स की अटेंडेंस का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की हद तक तो मैं ऐसे ही कह लें कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस तरह आपने भी बताया कि मैं कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और मैं अभी जिस कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें AGM रिसेंटली हुई है, और वो कोविड-19 में ही हुई और ऑनलाइन ही हुई। लेकिन उसमें ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट कह लें कि वो 200+ थे, तो उन सब की कह लें कि अटेंडेंस लगाना और उनको पेस्ट करके इस तरह मिनट्स का पार्ट बनाना, मिनट्स में तो उनका पार्ट नहीं बनता। आई थिंक अगर आप इसमें मुझे बता दें कि क्या AGM या जनरल बॉडी मीटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग कोई भी इस तरह की हो, उसमें क्या पार्टिसिपेंट के नेम ऐड करने पड़ते हैं मिनट्स में?
ड्राफ्ट मिनट्स हैं या अप्रूव मिनट्स जो नेक्स्ट मीटिंग में रखे जाएंगे? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तो हम लोग ऐड करते हैं कि ये पार्टिसिपेंट ऐड हुए थे। मैं आपको एड्रेस करता हूँ कि जो देखें उस्मान साहब, जो एजीएम की मीटिंग है ना, एजीएम की मीटिंग में तो आप किसी एक पार्टिसिपेंट को भी बाय नेम अटेंडेंस में नहीं डालते हैं। एजीएम की मीटिंग का जो पहला ऊपर वाला ओपनिंग पैराग्राफ होता है, जहां से हम अटेंडेंस शो करते हैं, तो वहां लिखा जाता है कि टोटल शेयर होल्डिंग में से इतनी शेयर होल्डिंग प्रेजेंट है और इतनी शेयर होल्डिंग जो है वो थ्रू प्रॉक्सी है, और लिहाजा टोटल इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे और इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें इंडिविजुअल बंदे को नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं होती। आपने जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखे ना, एजीएम का कोरम क्या है? एजीएम का कोरम ये है कि मिनिमम 25% in person लिस्टेड कंपनी के लिए, 25% in person which representing 25% शेयर होल्डिंग, और पब्लिक सेक्टर कंपनी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है कि 2% in person which representing 25% शेयर होल्डिंग। तो आपने शेयर होल्डिंग कंफर्म करनी है। जाहिर है आपकी जब कंपनी है तो आपके डायरेक्टर्स के पास इतनी होल्डिंग तो होएगी कि वो एजीएम के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें, अपनी यानी कि फॉर्म पूरा कर सकें शेयर होल्डिंग का। और उसके बाद अगर आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो सबसे नीचे एक 71 पार्टिसिपेंट्स का एक आपको डिजिट नजर आ रहा होगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को लिखने के लिए ये काफी है। बाकी आप उसमें अपना एक बीच में नोट दे दें कि जी चूंकि आपकी लिस्टेड कंपनी है, आई थिंक जो आप इसलिए थोड़ा परेशान है, अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड होती है कोई और होती है, उसमें तो शेयर होल्डिंग पता होता है कि कितने मेंबर्स हैं और उनकी कितनी होल्डिंग बनती है। तो आप उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप साइड से जो नाम आ रहे हैं ना, वो नाम आप उनके नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर, वो आपको कर लेने चाहिए थे वैसे। तो उसके बाद आप उनमें से उन नामों की जो है वो शेयर होल्डिंग निकाल लेते और आप बता देते जी इतने % शेयर होल्डिंग जो है वो इनकी रिप्रेजेंट करती है। रमीज हुसैन को प्लीज अगर आप दे दें। रमीज हुसैन ने भी हैंड किया था। जी जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जरा रमीज हुसैन को दे दें माइक। जी रमीज हुसैन कर लिया, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलें रमीज जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो बीओडी या कमेटी किसी का भी कोई चेयरमैन वो बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये था कि इस वक्त जो ऑनलाइन मीटिंग हम अरेंज कर रहे हैं कोविड की वजह से, उसमें जो हमारे मिनट्स हैं और जो वर्किंग पेपर हैं जो कि हम हार्ड फॉर्म में बनाते हैं, जब हम अपने मुतल्लिका बीओडी के जो डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, उनको भेज रहे हैं, तो क्या वो उनको मतलब कि रख सकते हैं रिकॉर्ड में या ज़ाया कर सकते हैं, या जो है उनके पास जो सॉफ्ट कॉपी हम भेजते हैं आजकल, क्योंकि सॉफ्ट का जो है वो ज़्यादा चल रहा है बजाय हार्ड के हिसाब से। और तो सर तीसरा क्वेश्चन में ये आप था। अपनी कंपनी का बता दें, आप किस कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ताकि आपकी बात सर को समझने में। हाँ जी सर, मैं इस वक्त जो है जेनको होल्डिंग कंपनी में एज अकाउंट असिस्टेंट हूँ, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के जो भी मामलात हैं उनको असिस्ट करता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ। तो इस हवाले से सर मैं पूछना चाह रहा था। एक और क्वेश्चन था, ये जो हाँ फॉर्म 26 सर, ये जो फॉर्म 26 है, उसकी हम जो भी रिजोल्यूशन कोई भी करते हैं, तो जो कंपनी सेक्रेटरी के जो ऑर्डिनेंस हैं, वो हम जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको उसका एसएससी दे सकते हैं, उनको जो कॉपी है वो जो कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ट्रैक रखना मुश्किल हो रहा है। रवि साहब, आपकी पहली बात का जवाब ये है कि ये जो है सीईओ नॉर्मली जो है किसी कंपनी का चेयर कन्वीनर नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें ये जैसे कि ऑडिट कमेटी में और एचआर कमेटी में तो ये डिसाइडेड है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो इनके मेंबर होंगे। अब अगर वो कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ कमेटियां बनाई हुई हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। मगर अगर ये कंपनी जो है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ और बाकी जो उसमें एक मतलब कंपोजिशन के साथ चल रही है, तो उसमें यह प्रैक्टिस नहीं है कि सीईओ जो है उन कमेटीज़ का चेयरमैन हो। तो वो अलबत्ता कुछ स्पेशल ये जो स्टैट्यूटरी कमेटीज़ होती हैं एक मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी में या लिस्टेड कंपनी में, तो उसके अलावा अगर कोई कमेटीज़ हों तो उसमें बोर्ड जो है उनको वो चेयरमैन बना सकता है या कन्वीनर बना सकता है ऐसी कमेटी का, अगर कोई स्पेशल पर्पस कमेटी हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, प्लीज़ उसको दोबारा बता दीजिए ज़रा।
हेलो जी रमीज साहब। सर रमीज साहब का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर्म 26 जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, क्या उसकी कॉपी हम किसी बोर्ड मेंबर को दे सकते हैं? जी हाँ, बोर्ड मेंबर को दे सकते हैं आप कॉपी दे उसकी। सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, डायरेक्टर को दे सकते हैं आप जी। और तीसरा क्वेश्चन क्या था रमीज साहब आपका? तीसरा रमीज सर साहब? मेरा ये था कि इस वक्त जो इस वक्त सर ये जो कोविड का चल रहा है, उस कोविड के दरमियान हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनट्स हैं या वर्किंग पेपर हैं, जो कि हम सॉफ्ट कॉपी एज भेजते हैं अपने बीओडी डायरेक्टर्स को और मेंबर्स वगैरह को, तो जी क्या जो है कि इसका कोई इस तरह का प्रोविजन है कि हम हार्ड के बजाय उनको सॉफ्ट भेज दें, और हार्ड वो क्योंकि जो पेपर का है वो काम थोड़ा बच जाएगा, पेपर वर्क है। ये रमीज साहब, ये मीटिंग का डिकोरम जो है ना, ये चेयरमैन ने सेट करना है, ठीक है, हर कमेटी के चेयरमैन ने और हर बोर्ड मतलब बोर्ड के चेयरमैन ने। तो ये कंपनी सेक्रेटरी अगर वो मतलब आजकल के देखें, अब ये इस तरह के गवर्नमेंट खुद इनकरेज कर रही है कि देयर शुड बी ए पेपरलेस एनवायरनमेंट, कि ये पेपर्स के लिए अब जंगलात काटते जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट काट रहे हैं, उसके बाद बाकी जो है जनूबी अफ्रीका के जंगलात काट रहे हैं, हर तरफ प्रॉब्लम है। तो अब वो कह रहे हैं कि भी अब ये पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ हमें मूव करना चाहिए और साइबर वर्ल्ड की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये मतलब गवर्नमेंट खुद भी मतलब अब ये मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जी मैंने अप्रूवल ली तो वहाँ पे सिग्नेचर लिया मैंने बड़े साहब का और इस तरह ये काम किया मैंने। तो अब ये है कि इन चीज़ों को कैटर करने के लिए एडिक्वेट सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है, सिस्टम्स मौजूद है, ईमेल्स का सिस्टम मौजूद है। तो ये आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि हमें अब पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, मगर इसका जो डेकोरम है, वो डेकोरम जो है वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या कमेटी जो है वो खुद डिसाइड करेंगे। उसमें यह है कि एक दफ़ा आप प्रेजेंट कर दें ये प्रपोजल कि ये मतलब इस तरह का इशू है और आपको जो है उसको लेके इस तरह लेके चलना है, और ये एक कन्वीनियंस है कंपनीज के लिए कि भी आप इंस्टेड के इतने पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं, तो इंस्टेड आप टैब के ऊपर लेके चलें, और जूम के ऊपर अगर आपने मीटिंग करनी है तो आपके पास ये मतलब एक तरीकाकार है कि आप सॉफ्ट में चीज़ें भेज दें। तो एक ये अच्छा तरीकाकार है, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। और मैं ये समझता हूँ कि इसको मतलब अमल दरामद करने के लिए एक कंपनी का बोर्ड जो है उसको सेल्फ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो ये आप अपने बोर्ड से जो है ये डिसाइड करवाएं ये चीज़ कि भी आइंदा से हैंस फोर्थ जो है हम पेपर नहीं भेजेंगे, बुक्स नहीं भेजेंगे पेपर्स की, और इसमें जो है ये मतलब ये इसका ये तरीकाकार होगा। जी सर, थैंक यू सर। So I am requesting to the Mohammed Junaid Yunus to please come for the closing remarks on behalf of PIPFA Islamabad branch committee, and I hope that no other member has raised any hand for the question. Mr. Mohammed Junaid Yunus is actually a convener and a chairman for the Islamabad branch committee of PIPFA. By profession, he is a banker, and he is a fellow member of so many professional institutes, and he has vast experience of the corporate sector. And I am requesting to the Mohammed Yunus to please address the closing remarks to the participants. सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज़ वॉइस नहीं आ रही। तो सर आपका माइक ओपन है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। We are very, I on the behalf of the convener, Islamabad branch committee, very thankful to the members, to the participants who attended this seminar, this webinar on the role of company secretary. So we hope that you have enjoyed very well in this session, and you have learned a lot from our experience, from the experience of Rehman, myself, and from the experience of Mr. Ahmed Noman. Mr. Ahmed Noman was actually remained 15 to 20 years in Lahore Stock Exchange, and we feel that we have delivered we have put our all efforts
to deliver our understanding about the corporate laws, about the corporate governance, and about the role of company secretary to the participants. So we are very thankful to all the participants for attending this webinar. Thank you. Allah Hafiz. I am requesting to the management of PIPFA to please start the national anthem and close the session. थैंक यू वेरी मच जिया सर, बहुत शुक्रिया।